आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है, इसका हमें प्लीज शेड बता दें। ये कमेंट्स हमेशा आते हैं उन वीडियोस के नीचे जहां मैंने इस तरह से मेकअप यूज किया होता है। एंड कभी भी मैं सही तरीके से आपको जवाब बता ही नहीं पाती, नॉट बिकॉज मैं छुपाना चाहती हूँ, ये भी कोई छुपाने वाली चीज है, बट इट्स बेसिकली बिकॉज मेरे अंदर है एक हलवाई, और एक लिपस्टिक एक तरीके से मैंने आज तक कभी लगाई ही नहीं। आई ऑलवेज मिक्स अप 2-3 थिंग्स। सो अगर मैं आपको बेसिकली कभी एक शेड लगाया होता है तो बता देती हूँ, बट इन जनरल आई कैन नेवर रियली गिव यू द राइट शेड बिकॉज मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैंने किया क्या है। हैविंग सेड दैट, मेरे पास 200 करोड़ लिपस्टिक्स नहीं है। मेरे पास एक्चुअली 6 लिपस्टिक्स हैं, जिनमें से 2 लिपस्टिक्स मैं साल के शुरुआत से लगा रही हूँ। सो लेट्स से फ्रॉम February to October, दैट इज ऑल आई हैव यूज्ड, 2 लिपस्टिक्स। एक लिप लाइनर भी है जो कभी कभी यूज करती हूँ, और अभी जो लास्ट की 1 महीने की वीडियोस हैं वहां मैं कुछ और लिपस्टिक्स यूज कर रही थी। एंड आई थिंक ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक्स हैं। दे आर एक्चुअली वेरी अफोर्डेबल। कोई शार्लेट टिल्बरी, नार्स, मैक, शैक कुछ नहीं है। दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल। सिफोरा की है एक दो, बाकी तो लाइक ड्रग स्टोर कैटेगरी की है। एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू माय फेवरेट लिपस्टिक्स ऑफ ऑल टाइम्स एंड बेसिकली टेल यू कि मेरे अंदर का हलवाई चीजों को मिक्स कैसे करता है। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम ब्रेक ले रहे हैं फ्रॉम स्किन केयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लिपस्टिक्स, बिकॉज लिपस्टिक एक ऐसी चीज है, इतना बेसिक मेकअप प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है हर लड़की, हर औरत लगाती है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस दिस इज काइंड ऑफ द फर्स्ट makeup product we ever started using. At least मेरे लिए तो lip gloss, colored lip gloss was my first makeup product, and mascara and kajal, and फिर वहां से पागलपन शुरू हुआ। Anyhow, so let's very quickly get into it. Like, subscribe if you enjoy science-backed daily skincare content. You know the drill. So शुरुआत करते हैं उन लिपस्टिक्स के साथ जो मैं साल के शुरुआत से लगा रही हूँ। So since about February of this year. And I like long wearing lipsticks, okay? Because I go to work, I wear a full face of makeup, I never touch up my makeup. At best, अगर मैं वॉशरूम में गई, थोड़ा सा नोज ऑयली हो रहा है तो मैं टिश्यू से डैप कर लेती हूँ। I don't do touch-ups, I don't have time for it. It's just not my thing. So मुझे long wearing lipsticks अच्छी लगती हैं। And सालों से, since about 2016, I was always using Huda Beauty. Huda Beauty के liquid mattes are my favorite, and her shade, one shade that I love, 2 shades जिसे मैं mix करके लगाती हूँ, one is Bombshell, the other is Wifey, and those are my absolute favorites. Individually लगा लेती हूँ, mix करके लगा लेती हूँ, whatever else. And the fact is that the colors are beautiful, they are so pigmented, but liquid lipsticks drying है। उनका new formula भी इतना कोई ज़्यादा hydrating नहीं है, but I have always used it because मुझे colors बहुत पसंद हैं। But earlier this year, I discovered the Maybelline Superstay lip vinyls, and these are my absolute favorite. इन्हें मैंने इतना extensively test किया है। These do not move. आप कुछ भी खा लो, आप बीच के अंदर चले जाओ, पानी के अंदर चले जाओ, ऑफ कोर्स ये लाइट हो जाती हैं, उतरती नहीं हैं। एट द सेम टाइम ये ड्राइंग नहीं है। सो दीज आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट लॉन्ग वेयरिंग लिपस्टिक्स, एंड इसमें आई थिंक 8-9 शेड्स हैं, बट लेट मी टेल यू अबाउट द 2 shades that I absolutely love. The shade number 1 is Saucy 65 and the other shade is Peachy 15. अब जो Saucy 65 है, ये एक maroonish pinkish, में कलर डिस्क्रिप्शन थोड़ी वियर्ड है, इस तरह का शेड है। एंड जो पीची है, इट इज पीची, बेसिकली इट इज लाइक अ पीचिश ब्राउन। नाउ ऑब्वियसली आई एम फेयर स्किन टोन, तो मुझे लगता है कि मेरे पे अच्छे लगते हैं, बट जनरली ये जो कलर Saucy 65 है, आई फील दिस विल लुक गुड ऑन ऑल स्किन टोन्स, बिकॉज अगर आप Maybelline की वेबसाइट पे उनके स्वॉचेस भी देखें, यू सी इट ऑन मॉडल्स विद डिफरेंट स्किन टोन्स, सब पे बेहतरीन लगता है। एंड दीज आर माई 2 एब्सोल्यूट फेवरेट्स। अब बात करते हैं हलवाईपन की। सो इसे मैं कभी कभी मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा सॉसी बीच में, सॉसी थोड़ा सा बाहर, पीची थोड़ा सा अंदर, वो थोड़ा सा ओम्ब्रे ग्रेडियंट इफेक्ट देता है। सो आई लाइक टू मिक्स इट अप, दिस इज व्हाट आई लाइक टू यूज, दे आर माय एब्सोल्यूट फेवरेट्स। इसमें और भी शेड्स हैं एंड आई हैव 2 मोर, बट ऑनेस्टली व्हेन आई अप्लाइड देम ऑन माय फेस आई डिडंट थिंक दे वर फ्लैटरिंग। सो एक बहुत ब्राइट रेड है जो मैंने इसे बहुत शौक से खरीदा था, बट इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग फॉर मी, और प्लस मैं रेड पहनती भी नहीं हूँ, सो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। That's not true. I wear red, but that was too bright a red, so that's not for me. और एक और पिंकिश था जो सब पे बहुत अच्छा लगता है, पर मुझ पे नहीं लगता। So that's, but these are my absolute 2 favorites, and they are super affordable. I think when they're on sale, they are for like 650 rupees. Here in Dubai, you get them for like
40-45 dirhams, you get them everywhere. Maybelline हर जगह मिलता है, absolute favorite. And what I love about this formula is कि जब ये आप लगाते हैं, it's glossy, ठीक है? So glossy formula है, but ये lips पे धीरे धीरे mattify कर जाता है. And जो gloss भी है, it's not like a goopy chip gloss. It's very very gentle. And these are my first two that I absolutely love. Oftentimes videos में अगर आपने मुझे देखा है wearing a very light blush kind of a lipstick, तो वो लिपस्टिक होती ही नहीं है. पिछले 2-2.5 सालों से एक पर्टिकुलर शेड है लिप लाइनर का बाय अ ब्रांड कॉल्ड कैट्रीस, एंड आई डोंट नो इसकी इंडिया में क्या प्राइस है, बट कैट्रीस इज सुपर चीप. लाइक दुबई में ये 9-10 दिरहम का ब्रांड है. लाइक इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल. इसकी ये लिप लाइनर्स हैं, लिप प्लम्पिंग लिप लाइनर्स, जिसमें एक शेड है 020 वाटर डॉल, विच इज दिस ब्यूटिफुल लाइट peachy brown नहीं कह सकते, it's a peachy color which I absolutely love. खरीदा था मैंने इसे सबसे पहले as a lip liner because I felt generic है, हर चीज के साथ चल जाएगा. But one day I just applied it all over my lips, put on a little Vaseline, and I thought I had my perfect shade ever. So now because this is such an affordable brand, इसके मैं ना 5-10 जितने मेरे को Amazon allow करता है खरीदने के लिए, मैं उतने सारे खरीद लेती हूँ because then they kind of go out of stock and whatever. I absolutely love this color and I have worn this a lot. I've been wearing this since like last year and before. So if you've been following me for a while from like TikTok, Insta, whatever, then you know this thing. It's not a lipstick, it's a lip liner, and that's also something I use very often. जिन दिनों पे आपको लगता है ना कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया लिप्स पे, उस दिनों पे मैंने लगाया होता है लिप टिंट. सो ये मुझे एक्चुअली फ्री मिला था, आई डोंट नो व्हाई, बट आई गॉट दिस फ्रॉम एट्यूड हाउस. दिस इज देयर वाटर टिंट इन द शेड डियर डार्लिंग, एंड फॉर अ वाटर टिंट यू कैन सी आई हैव यूज्ड इट क्वाइट अ बिट. नाउ मुझे यूज करना बहुत पसंद है. आई एक्चुअली यूज दिस समटाइम्स टू आउटलाइन माई लिप्स लाइक अ लिप लाइनर, बिकॉज इसका जो applicator here, it's like a stiff applicator, right? So I use this to outline my lips, then I fill it in with some kind of a lipstick. I do all kinds of things with it. It is my absolute favorite tint, but ये काफी dark है. So when I apply it and I let it sit in, then मैं tissue से इसे blot करती हूँ and it gives me the most beautiful lips. If I'm feeling extra fancy, मैं कोई gloss या Vaseline लगा लेती हूँ, and that's about it. So that's the other product. I use this quite a bit. And the latest discovery that happened only a month ago, and I have to talk about this because Sephora का makeup मैंने इतना कभी कोई खास यूज नहीं किया है, but I was really pleasantly surprised. So दिवाली के टाइम पे मुझे Sephora से PR आया था, and उस PR में था ये Sephora Soft and Easy Matte Lipstick. And I got this shade 05, which is like a beautiful bright pink. And you've seen this in so many of my videos. I've been wearing this. I just loved the formula. Soft matte, that's exactly what it is. बिल्कुल lines में settle नहीं करता. It is super super soft. It is like if a tint and a liquid lipstick had a baby, this one would be born. And that's exactly what it is. Beautiful. So ये मुझे free मिला था. And उसके बाद I went to Sephora and I got 2 more shades. So I ended up getting the 08 and the 0. नहीं गिरा. I ended up getting the 08 and the 01. The 08 is what I'm wearing right now. But I'm not wearing it alone. Okay? मैंने 08 के साथ 05 को थोड़ा सा mix किया था, हलवाई, and that's how I got this shade. And then this one, which is the 01, this is like a really light nude. It looks beautiful. But I think this will work mostly on fair skin or like lighter shades. But ये जो दो colors हैं, 05 and 08, this will work on literally everything. I think 08 is this beautiful rusty orange, and I do believe that this will look beautiful on like especially desi skin, brown skin पे ये बहुत बहुत हसीन लगेगा. So these are my absolute favorite. I think I'm just going to buy a lot more shades. They also have reds, which I've not tried, but these are my absolute favorite. And the best part is because it's a formula like this, you can mix it, you can do whatever you want. And that is that. But I do have a favorite red. And this favorite red, I've never worn it as a lipstick. I promise you guys, I've never worn this as a lipstick, but I have always worn it as a blush. So ये है Rare Beauty का liquid lipstick का mini, जो मैंने कुछ minis खरीदे थे, like Rare Beauty के blush highlighter something mini, उसमें ये lipstick थी. Or this came with a mascara, I'm not sure. But basically, this is a lipstick. Okay, this is the Rare Beauty red color lipstick. But, and I'm going to show it to you right now. When you like put it on your cheeks and you blend it out, you get the most beautiful blush
Can you see? And I obviously मुझे मिला था as a lipstick. I've tried it as a lipstick, but again, this is not my kind of red. Again, this is not my kind of red. It's a very specific red, but I think this makes the most beautiful blush. तो अगर आपको liquid blushes पसंद है, and if you're just into that, or if you enjoy a red lipstick, this is something I recommend. This is actually called, the shade is called Inspire, and this is by Rare Beauty. So basically guys, ये थी मेरी 6-7 लिपस्टिक्स जिससे मैं ऐसे मिला विला के यूज करती हूँ. This is all I've been using throughout the year. These are my favorite lipsticks of this year, and most of them are affordable. Sephora वाली मुझे नहीं पता कितने की है, but like Sephora brand की lipsticks usually affordable होती हैं. Maybelline is affordable. They're all super affordable. And I hope you enjoyed this video. For anyone who's ever asked me about my lip color, now you know what it is. If you enjoyed the video, don't forget to like and subscribe. I will see you tomorrow with a skincare video. Till then, take great care of yourself. Bye.